Look at this question number 6. Same thing we need to find. Polar form में represent करना है. So suppose this is Z. Z is equal to -3. What is the imaginary part? I, 0 I. तो I दिखाई नहीं दे रहा है. It's 0 because of that, right? Now, अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म से रिप्रेजेंट करें x प्लस आई वाई से, सो व्हाट इज x इन दैट केस? सो कंपेयर करेंगे देन x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 0 इन दिस केस, राइट? नाउ फाइंड द मॉडुलस. पहले मॉडुलस फाइंड करते हैं r. सो r इज इक्वल टू z मॉडुलस इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ -3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर is equal to 3, right? I hope it's clear to you. Now we know that x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Now find out the value of cos and sin from here after putting the values. So x है -3, r is 3 and it's cos theta, right? Y is 0, r is 3 and it's sin theta. Now what is the value of cos theta from here? Cos theta is equal to -1, right? And sin theta is equal to 0/3 is equal to 0. So cos is negative and sin is positive. What is the value of tan theta? Sin upon cos. It's 0/-1 is equal to 0, right? Now tell me in which quadrant cos is negative and sin is positive? In which quadrant cos is negative and sin is positive? Think it. Nishtha. Cos is negative. Sin second quadrant. Yes, absolutely right. It is in second quadrant. तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है cos की वैल्यू -1 आएगी और sin की 0. और ये 0 कब होता है tan या sin 0 कब होता है? एट 0 डिग्री, राइट? अगर यहाँ पे 0 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा एंगल? पाई -0. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? आर्गुमेंट क्या हुआ? थीटा हो गया पाई -0 सेकंड क्वाड्रेंट में. नाउ आर्गुमेंट ऑफ z थीटा इज इक्वल टू पाई -0. तो पाई -0 is equal to pi, right? Now what is the polar form? So polar form is z is equal to r cos theta plus I sin theta. अब हमारे पास r भी है, थीटा भी है. पुट इट हियर, यहाँ पे पुट कर दीजिए. r की जगह पे -3, थीटा की जगह पे पाई प्लस I sin pi. So this is the answer in this case. So this is the polar form representation of the complex number. I hope this question is clear to you. Okay, r is not -3, r is +3, right? R is +3. So this is the answer in this case, right? Now let's move to the next question. Look at this question number 7 here. So z is equal to √3 plus I. So what is the value of x in this case? X is equal to 1, not 1. X is equal to √3 and y is equal to 1. When you compare it with the standard form x plus iy, then we have obtained this thing. Now
मॉडुलस फाइंड करते हैं आर। आर क्या होता है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। It comes out to be 4. Then it's equal to 2. So the modulus is 2. Now let us find argument. Argument is x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Now put the values here and find the value of theta and cos and sin. So the value of x is root 3, r की value 2 और ये cos theta. So cos theta comes out to be 2 by root 3 and put the value of y. Y is 1, it's 2 sin theta. So what is sin theta in this case? Sin theta is equal to 1 by 2. So both are positive. So what is the value of theta in this case? दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो sin 1 by 2 कब होता है? When sin is 1 by 2. At which angle? And cos is I have written it wrong. It's not 2 by root 3. It's root 3 by 2. Okay. और cos root 3 by 2 कब होता है? What is the value of theta in this case? So sin is 1 by 2 at in the first quadrant it is lying, both are positive. तो क्या वैल्यू होगी थीटा की? It's 30 degree, pi by 6. ठीक है, पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करनी है. पोलर फॉर्म क्या होगी नाउ? पोलर फॉर्म z is equal to r cos theta plus I sin theta. So this thing we have already discussed. So this is the polar form. So if you put the values here, तो r की जगह पे रखेंगे 2 cos theta. Theta है pi by 6 plus I sin pi by 6. So this is the final answer in this case. So this is the polar form, right? I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 8 here. Question 8, z is given I. So what is the real part here in this case? So it can be written like this also. 0 plus I. So अगर आप इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो z is equal to x plus iy. So the value of x in this case is 0 and y in this case is 1. Now modulus क्या होगा? The formula for modulus is r is equal to root x square plus y square. So it's 0 square plus 1 square is equal to 1, right? Now x is equal to r cos theta. थीटा फाइंड करते हैं and y is equal to r sin theta. Put the values here and find the value of cos and sin. x हमारे पास 0 है, r 1 है and it's cos theta. So cos theta is equal to 0 upon 1 is equal to 0 and y is 1, r is 1, sin theta. So sin theta is equal to 1. दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे. They are lying in first quadrant. So when sin is 0, when cos is 0 and sin is 1, cos 0 और sin 1 कब होगा? At which angle? At 90 degree. So the value of argument is 90, right? Now let us write the polar form. Now polar form, we know the polar form is z is equal to r cos theta plus I sin theta. Now put all the values here in this. तो r की वैल्यू रख दीजिए, r is 1 और cos थीटा की जगह पे पाई बाय 2 प्लस I sin पाई बाय 2. ठीक है, सो दिस इज द पोलर फॉर्म. ये पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है.
और अगर आप इनकी वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे, देखो कोस की वैल्यू रख दोगे, अगर कोस 90 की वैल्यू रख दोगे और साइन 90 की, तो ये क्या बचेगा, आई के इक्वल आएगा, क्योंकि ये 1 रहेगा, ये कोस 90 0 होता है, 0 प्लस आई इज इक्वल टू आई। तो आई को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज पोलर फॉर्म, राइट? So this is all about this exercise. I hope all these questions are clear to you.